वेलकम टू निरोग स्ट्रीट वीडियो सीरीज। आज का टॉपिक है डेंगू। डेंगू के इंडिया में 390 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस होते हैं, जिनमें से मेडिकल अटेंशन बहुत ही कम केसेस को मिल पाता है, जिसकी वजह से हर साल रेनी सीजन में बहुत सारी डेथ्स होती हैं। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर गीता कृष्णन, जो हमें बताएंगे कि कैसे हम इससे बच सकते हैं और कैसे हम रेनी सीजन में अपना ध्यान रख सकते हैं। वेलकम टू निरोग स्ट्रीट डॉक्टर। सर, डेंगू एक्चुअली में है क्या? क्यों होता है डेंगू और रेनी सीजन में ही ये इतना क्यों फैलता है? देखो, डेंगू एक वायरल फीवर है। वन काइंड ऑफ वायरल। डेंगू का मच्छर होता है। डेंगू मच्छर से फैलता है, मच्छर फैलते हैं। तो दिस मॉस्किटो, मच्छर इज कॉल्ड एज Aedes mosquito. So this mosquito will breed during the rainy season, which has some kind of a heat. Like, for example, a warm rainy season is when this mosquito can breed quite well. So that is, for example, in Delhi or in tropical climate like Kerala or Karnataka, where there is enough sunlight, and then suddenly it rains, and the water is maintained at a, like, water is cooling in different parts of the space, even in small containers. They get warm to a particular condition where the dengue mosquito, the Aedes mosquito, can actually put their eggs in it, and then it can larvae हो सकता है उसमें, और उसमें वो फैलता है। जैसे ही फैलता है ना, कुछ एडिस मॉस्किटो के अंदर, लार्वे के अंदर ही डेंगी वायरस का सीड होता है। वो जैसे ही वो लाइक उगना शुरू होता है, उसके अंदर डेंगी वायरस इज रेडी टू ट्रांसफर to the next patient. So whenever that mosquito, the Aedes mosquito, which is infected with dengue, bites a patient, they get dengue fever. It's a viral infection basically. तो सर, जैसे डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उसकी वजह से हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो ये क्यों होता है? प्लेटलेट्स क्यों कम होते हैं? देखिए, डेंगू में प्लेटलेट कम होते हैं, पर डेंगू में यूजुअली प्लेटलेट कम होने की वजह से हॉस्पिटलाइज करने की इतना ज़रूरत नहीं। प्लेटलेट, द डेंगू हैज़ मच मोर सीरियस कॉम्प्लिकेशन। जैसे लंग्स के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर पानी भर सकता है, आपके पेट के अंदर पानी भर सकता है। मीन्स इसके अंदर क्या होता है, जो कोश होता है, जीव कोश, जो शरीर शरीर को बनाता है, उससे पानी निकल जाता है, और वो पानी शरीर के अंदर जमा हो जाता है, एंड देन दैट इज वेरी डेंजरस। इफ इट हैपेंस इन द लंग्स, इफ इट हैपेंस इन द इन द स्टोमक, इफ इट हैपेंस इन द ब्रेन, वो हमारा जो पॉसिबिलिटी है फंक्शनिंग का, उसको खराब करता है। उसके साथ साथ प्लेटलेट भी कम हो जाता है। प्लेटलेट इज समथिंग विच इज, हम उसके हिसाब से डेंगू को देखते हैं, और डेंगू से we get frightened by dengue because thinking about platelet, but platelet आजकल इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आजकल प्लेटलेट को हम मैनेज कर पाएंगे, प्लेटलेट हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। पर डेंगू का जो बाकी जो प्रॉब्लम है, if it gets into the complication of lungs getting filled with water, or your peritoneum gets filled with water, your brain gets filled with water, or some kind of a reaction which actually affects your brain, वो बहुत खतरनाक है। पर डेंगू से जो हम जो बताते हैं ना, डेंगू से डेथ होता है इमीडिएटली, ऐसे कुछ भी नहीं। डेंगू इज ए वेरी डेंजरस डिजीज, बट डेंगू से जितना लोगों को डेंगू होता है, उसे लाइक लेस देन 1% ऑफ द people who have dengue, or not even 1%, much lesser than 1% of the people who have dengue will have any kind of a fatal reaction. So it is a well managed disease, provided आपका जो डॉक्टर है वो उनका कॉम्प्लिकेशन को समझ सकता है और उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकता है। तो सर, जैसे डेंगू फेटल भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है, तो इसके क्या सिम्टम्स है? जैसे जैसे पहले है ना, डेंगू आते हैं तो आपको फीवरिशनेस होता है, उसके साथ साथ है ना, शरीर में कुछ रैशेस हो सकता है, और पेट में दर्द, या छाती में दर्द, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकता है। अगर ऐसे होता है, दर्द फीवर के साथ पेट में दर्द, या और फेंटिंग, और हाई फीवर, और वेरिएबिलिटीज ऑफ फीवर एक्सेट्रा होता है, शरीर में रैशेस होता है, देन यू शुड इमीडिएटली गो एंड सी अ डॉक्टर। उसमें खुद अपने आप करने की कुछ भी नहीं है। इट शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय ए वेल
like trained doctor. So you can go to an Ayurvedic doctor, you can go to an allopathic doctor. आयुर्वेदा में इसका बहुत अच्छा इलाज है. अगर डेंगी का केसेस हमारे पास पहले ही आते हैं तो हम उसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं. तो ना हम इधर देते हैं कि हम इसको एक सान्निपातिक ज्वर बोलते हैं. लाइक उसमें पाइतिक सान्निपातिक ज्वर है हमारे तरफ से डेंगू. तो इसीलिए हम पाइतिक सान्निपातिक ज्वर का जो काढ़ा होता है उसको बना के देते हैं. इससे हम देखा है कि जैसे इस हॉस्पिटल में हम देते हैं, जिसे NS1 पॉजिटिवली आइडेंटिफाइड पेशेंट जो इधर एडमिट हो जाता है इंडियन मेडिसिन टीम के अंडर, उनके साथ हम काम करते हैं. डॉक्टर सुशीला कटारिया के सारा पेशेंट्स को हम डेंगू का मेडिसिन भी देते हैं हमारा. उससे हमने जो देखा है, जो जितना हमने पिछले साल मोर देन 82 पेशेंट्स को ट्रीट किया उसी तरह से जैसे NS1 पॉजिटिव था उसको, है ना. हमें ऐसे देखे कि किसी को भी ICU में एडमिट होने की जरूरत ही नहीं पड़ा. And it was such a wonderful experience. Like 82 patients who got treated with Ayurveda, and the basic treatment was Ayurveda, and then the rest of the things were supported quite well by the internal medicine department. If there was, because there is not much of a medication as such for dengue. Like the problem in allopathic medicine is that you have a good like management of dengue symptoms, but to kill the virus you don't have anything. To reduce the viral load there is nothing. If the virus decides that it is going to increase in number, then you have had it. So उसको मैनेज करने के लिए एलोपैथी में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पर हम सोचते हैं कि हमारे मेडिसिन से वायरल लोड कम होता है, क्योंकि देयर आर सम स्टडीज व्हिच हैज ऑलरेडी बीन डन एंड ऑन certain medicinal plants which says that we can bring down the viral load, and once we can bring down the viral load then the treatment becomes much better. But more importantly, जब हम आयुर्वेद का दवाई डेंगू के ट्रीटमेंट में इंक्लूड करते हैं, पेशेंट का जो साइड इफेक्ट है ना वो ऑलमोस्ट नील होता है. So patients do not, they might be affected with dengue, but उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. They come out safe in about 4-5 days. They will have fever, but they will come out without any problem from dengue. तो डेंगू से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे बढ़िया जो होता है ना, you should avoid mosquitoes from biting. तो उसका मतलब है कि जब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है या शाम को जाए, डेंगू का मच्छर ऐसे हैं, एडिस मच्छर है ना, जो सुबह उठते हैं जैसे और शाम को भी उठते हैं. जैसे ही सन थोड़ी नीचे चले जाता है, सन ऊपर आ जाता है, वो क्लाइमेट उसके लिए बहुत अच्छा लगता है. वो दैट इज द फीडिंग टाइम. तो अगर आप शाम को या सुबह आप like if you go for a morning walk or you have a habit of getting up and walking around or exposed to such atmosphere where dengue machar ho sakta hai, then you should make sure that you are well covered, and you should, if possible or if it is required, you can apply some mosquito repellent. You can also prepare many like medicines from Ayurveda into oil, can convert them into oil. For example, neem oil use कर सकते हैं आप geranium का oil use, गेंडे के फूल उसका ऑयल यूज कर सकता है, और लाइक वाइटेक्स निर्गुंडी कहते हैं, निर्गुंडी का ऑयल यूज कर सकते हैं. अलग अलग ऑयल्स है जिससे लेमन ग्रास का ऑयल यूज कर सकते हैं. जिससे मच्छर पास आने से डरता है, तो है ना, उस तरह का ऑयल आप बहुत सिंपली आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं, और ऑयल थोड़ी सी लगा देना, और अगर घूमने जाते हैं तो उस तरह से लगा. बट द बेस्ट ऑप्शन इज टू मेक श्योर दैट मच्छर काटेंगे नहीं आपको. और in the evening it is always better that you use a like mosquito net. That's the best option. Like whatever you say, whether you apply you cover yourself up well, or even if you make sure that you are applying like a what's it called, mosquito repellent, still mosquitoes can bite, or mosquitoes do bite. So it is better to use a mosquito net rather than anything else. Cover yourself well and make sure that your exposure to mosquito infested area is much less. Make sure that mosquitoes do not grow or breed near where you are staying or working, because Aedes mosquito like don't require too much of water. It requires good water, means very drinkable potable water, like very clean water, and it requires a little bit, maybe not more than 10 ml of water. If it is staying somewhere, it will come and put eggs there and it can grow. So we need to make sure that you have to actually keep on looking whenever it starts raining.
that small droplets of water, or like collections of water, even it can come in an ice cream cup, or a overturned the cap of a bottle. All those things can allow these mosquitoes to grow. So you should actually make sure that those such things are not available around you, like plants, aloe vera plant, which is like this. It can, many of these plants can hold water within their leaves, and that is enough for that. So you should, if you are growing such plants near in your house, you should always make sure that you are, while watering the plant, you are not allowing water to collect among its leaves, or among its like folds. These are some simple things which we can do, which can prevent us from getting, or prevent us from getting bitten by mosquitoes. सर आयुर्वेदा में इसका क्या इलाज है डेंगू का? आयुर्वेद डेंगू को एक सान्यपातिक ज्वर मानते हैं। इसमें पाइतिक सान्यपातिक ज्वर है, मीन्स इनका इनका सीवियर कंडीशन में इसको हम पाइतिक सान्यपातिक ज्वर बोलते हैं, क्योंकि इसका ना प्लेटलेट जैसे कम हो जाता है, इसमें ब्लीडिंग हो जाता है। जैसे ब्लीडिंग और सच सिम्टम्स को देख के हम इसको पाइतिक सान्यपातिक ज्वर, हम इसका दवाई देते हैं। उसमें काढ़ा है, पाइतिक सान्निपातिक ज्वर का काढ़ा है, इसमें चिरायता है, इसमें इसमें बलूची है, इसमें लाइक परपड़ा है, which is a grass which is available, which is actually for useful in management of fever. So we have these 4-5 like plants which we put together. We make a kadha out of it and give it to patients. It is very useful to patients. So that's how we try to manage dengue. The other way of managing high fever in dengue is that if it is for 3-4 days, we give a medicine called Tribhuvana Kirti Rasam. It's also called as Tribhuvana and like Kirti, Tribhuvana Kirti Mishran. त्रिभुवन मिश्रण करके मिलते हैं, तो उसको हम देते हैं दिन में 2 बार। उसका टेम्परेचर बहुत अच्छे तरह से मैनेज हो जाता है। वी गिव इट फॉर 3-4 days। इट्स यूजफुल मेडिसिन। जो पित्त ज्वर कषायम जो मैंने अभी बताया वो देते हैं। गिलोय का जूस देते हैं इसको प्लेटलेट को मैनेज करने के लिए। उसके ऊपर भी प्लेटलेट अगर कम होता है तो उसको पपाया का लीफ जूस देते हैं, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर प्लेटलेट बहुत कम हो जाता है, जैसे 10,000 15,000 तक पहुंच जाता है, तो हम पपाया का लीफ जूस दे देंगे, तो 24 आवर्स और 36 आवर्स में वो 72,000 8 लाख से ज़्यादा हो जाता है। पपाया का लीफ जूस शुड बी गिवन अंडर ए प्रॉपर गाइडेंस, नॉट लाइक पपाया का लीफ जूस एक बात है ऐसे कि पूरा पपाया का लीफ लेके उसको उससे पीने से कोई फ़ायदा नहीं होता। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज पपाया लीफ हैज़ लाइक वेरी लार्ज वेन्स इन इट। उस वेन्स को काट के सिर्फ वो जो पत्ते होते हैं ना, प्लेन पत्ते, उसको निकालना पड़ेगा। यू शुड नॉट यूज अ लार्ज वेन्स और यू शुड नॉट यूज अ स्टेम आल्सो। इट्स अ प्लेन flat patte that is available, that should be cut out, and we should take juice out of it without adding any water or anything. Take 20 ml of juice from that and then drink that twice a day. If you are not diabetic, you can add some honey also. It will give you excellent result. That is almost as good as done. So if somebody with a 15,000 to 10,000 platelet count is given that, we have given it to hundreds of patients, so we know that it works. So that is something, but people do not know how to use it. They know that papaya leaf juice works, so they have started eating papaya. They have started eating papaya stems, and when they say leaf of papaya, they use the entire papaya leaf. It doesn't work. Actually, it's counterproductive. It doesn't work, and it actually prevents from papaya working later also. Papaya is also not a papaya leaf is also not a like a preventive. So somebody in the media was saying that it is a preventive medicine. So last dengue season, there was no papaya leaf available for us, because everyone started eating all papaya leaf juice. Like there was papayas where the fruits were available but the leaves were not available, because people started eating papaya leaves. But it didn't help. It does not help. And actually what happens is, if you start taking papaya unnecessarily for a long period of time, your body gets used to it. And when you want papaya leaf juice to work for you, it doesn't work, because your body is already used to it. And in spite of papaya leaf juice, your platelet count is going down. And then again, by giving papaya leaf juice doesn't work. So it is better that if your platelet count goes down a particular level, and if your doctor prefers, then you should take papaya leaf juice. So like these are things which we have seen. And if there is bleeding, there is a medicine called as Vasa. This is Adatoda Vasika. We give that medicine. Like it's also like a leaf which we take the juice out of and give it to patients.
So we have found that it is useful in prevention of bleeding and actually stopping of bleeding. थैंक यू डॉक्टर। आई एम श्योर ये पॉइंट्स हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू सो मच। For more such videos, please like, share and subscribe to our channel. Stay healthy, stay in your room.